On 13th of March 1949, Bombay Chronicles Weekly reported that Bombay's luxurious Liberty Cinema has been inaugurated. Claimed to be the most modern and streamlined cinema installation in India, the Liberty Cinema was inaugurated last night in the presence of a distinguished gathering. The opening ceremony was highlighted by a 90-minute show of Walt Disney's Bombay with Hindi dialogue and Indian background music. Mr. Chandulal Shah, while thanking the management of the cinema for giving this most up-to-date, air-conditioned theatre to the film industry and to its patrons, said that a new era has been ushered in the film world of India. Nothing has been spared to make the Liberty attractive and comfortable. It is claimed to be the only cinema in India with a new push-back seats. The theatre will shortly begin its regular showing with Mehboob Productions' Andaz as the first picture to be run by the theatre. He started by showing 16mm films in the Bandra Gymkhana every Sunday. For World War II, Bombay, Devlali, Pune, Nasik was a major allied base for the fight against the Japanese. We had troops from various countries, Australia, New Zealand, India, the UK and God, our own troops, of course. He was then picking up cinemas left, right and centre. From the troops. Yeah. There was no entertainment here. When the war ended, he suddenly realized that all the money that was being made was not necessarily going to the bank. So at the end of it all, he decided to put all his eggs into one basket. And this is the basket. I see. Which made eminent sense because at that time, all the cinemas in this part of Bombay were showing English films. Yes. We were the first Hindustani cinema. Yes. It was called the Liberty Cinema because we started in 47. India got its independence at that time, and that name didn't take too long to establish. The formal opening was a film of Mehboob Khan called Andaz. And the curtain opened sideways in those days. The screen was small. Now it's vertical because the screen is as big as it can get. There were ribbons tied across. I cut one of the two ribbons, and a young daughter of Moti Chand, who built this cinema, cut the other ribbon. There were no ministers and all the rest of that. The Bombay hospital, which is next to us, they used to complain that, our premieres would be very noisy. But they used to have strikes, far more noisy than our premieres. They said it would be a good idea if the cinema moved. And my father was telling me they think we're on wheels or something like that. लिबर्टी सिनेमा तो चालू हुआ होगा जब तो हमारा बॉन्ड भी नहीं हुआ था पर ऐसा सुना है कि 1949 में थिएटर ओपनिंग हुआ था। मैं पहली फिल्म देखने आया था छोटी बहन और मैं एकदम छोटा सा था तो उससे पहले फिल्म मैंने देखी थी बूट पॉलिश। बहुत छोटा था जब मुझे उतनी समझ में नहीं आती थी तो वो खाली याद रह गया। वो डेविड साहब कुछ बजाते थे धना धन क्या क्या करते तो निकल गए पूरे बजते तो ऐसे सीन है बस। उसके बाद तो फिर ये घर जैसा हो गया मेरा। इतना साल से मैं काम कर रहा हूँ, इतना साल से मैं देख रहा हूँ तो मेरे को एकदम इतना लिप को मेरे को एकदम ऐसा लगता है कि ये मेरा ही ये प्रॉपर्टी है। मैं बॉम्बे में कोई भी थिएटर में ऐसी डिज़ाइन और ब्यूटीफुल देखा नहीं है जितना लिबर्टी में है इतना। पूरी बिल्डिंग, पूरा थिएटर, पूरा घर, ये नीचे से लगा के ऊपर तक एक ही जैसा डिज़ाइन है। पूरा ऑफिसों के अंदर इधर उधर सब हर कोना साफ सुथरा दिखेगा और गोल दिखेगा। और इसका जो आर्किटेक्ट था वो भी मेरे जैसे गोल था। अब आप नोट करना ज़्यादातर कर हर चीज़ गोल होगी, इसकी हर चीज़ गोल होगी। कोना आएगा तो मजबूरी में आएगा।
बहुत बड़े बड़े प्रीमियर हुए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, वी शांताराम, महबूब साहब, ऐसी सन्नी साहब और बड़े बड़े डायरेक्टर सब ऊपर टेरिस के ऊपर मिनी थिएटर जिसमें आप शूट करके आए ना, वहाँ पे मतलब पिक्चर सेंसर करते थे और वहीं ऊपर टेरिस पे मीटिंग होती थी। जो उसका जो स्क्रीन भी है, जो उसका कर्टन भी है, वो भी हम लोग को बहुत अच्छा डिज़ाइन है, जो भी है हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को ऑर्डर मिलेगा, जो हमारे जो ऑपरेटर लोग हैं वो लोग ऐसा हम लोग ऑपरेट करते थे। उसमें कुछ 3 कलर की लाइट है, 3 बटन है, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। दिलीप साहब की पिक्चरें बहुत अच्छी चली, 2-2 साल चली। यहाँ पे अंदाज है और कोई नूर था और बहुत सी पिक्चरें थी। राज कपूर साहब की भी अच्छी पिक्चरें चली। बूट पाली जहाँ धमाल मचा रही थी। ओ हो पैसे फेंकते थे। मैंने भी चिल्लर उड़ाया। झूठ तो बोलना नहीं पड़ा, कैमरा देख रहा है ना तो जो उठाया खीसे में लेके चल दिया पैसे फेंकते थे लोग। Then I think it's 1994. Barjati has arrived one day and said, "We love your cinema and we want to put our new picture here, but you'll have to change the sound system." So I said, "It will cost me 10 lakhs to change the sound system. And what happens to me if your film bombs?" So they said, "All right, if the film bombs, we'll pay you whatever you've paid for the sound system." And then the rest, as they say, is history. Because Hum Aapke Hai Kaun came here and it was screened in 6 cinemas in Bombay only. And we ran full 3 shows a day. It was a 3-hour picture. We ran full 3 shows a day for 44 weeks. I mean, the income tax came to us to see whether our books were tallying with Rajshree's or not. And we had 2 million people through this. My God. And I think that's a record for a single screen theatre. I don't think any other single screen cinema anywhere in the world with the same product has catered to 2 million people. Wow. Yeah, that is these are all fascinating. historical facts that are not appreciated. सब जगह बदलाव आया, यहाँ नहीं आया। किसी ने बोल दिया था कि बोले सीटें लगाओ इसमें मल्टीप्लेक्स ऐसा ऐसा, तो मुझे भेजे थे, मैंने आके मना कर दिया। जो एक बार यहाँ आ गया यहाँ पे मतलब पिक्चर देखने के लिए, सर्विस और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, जो भी चीज़ें यहाँ की, जैसे एसी हुआ, ये वो बहुत सी चीज़ें ऐसी जो दिल को सुकून देती है। लिबर्टी का जो देख के पहले से जो देखे ले आदमी लोग हैं, वो तो अभी भी लिबर्टी में ही आते हैं, दूसरा थिएटर में जाते भी नहीं है। वो लोग को लिबर्टी की यादें बहुत आती है। History on one side says retain it for what it is, and people will appreciate eventually that this has remained the same. लिबर्टी में खुशी मिलता है, जब तो मैडम हम 31-32 साल निकाल दिया। Disappear.